Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. You are watching YouTube channel Real Life Study. This is the book of grade 8 Science Fact File. ऑक्सफोर्ड की ये बुक है जिसका चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आज की इस वीडियो में इस चैप्टर नंबर 10 के तमाम तर टेस्ट योरसेल्फ आपको सॉल्व मिलेंगे, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टेस्ट योरसेल्फ पेज नंबर 159 पर मौजूद है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट। आंसर लिखें। द फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द एसआई यूनिट एंड सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल करंट। The SI unit of the electrical current is the ampere, usually shortened to AMP। ये इसका सिंबल है and its symbol शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है and its symbols। What is voltage? The force that is needed to move the electron is called voltage। फोर्थ क्वेश्चन है, what is SI unit and symbol for voltage? The SI unit of voltage is volt and its symbol is V, capital V लिखते हैं। Suggest why voltage is also known as potential difference। Voltage is measure of the difference in electrical energy between two parts of a circuit। This is why voltage is also known as potential difference। Describe how you would connect an ammeter and a voltmeter in on electric circuit। आंसर में लिखें। The positive terminal of the battery should be connected with the positive ends of the operator and then the negative of the battery should be connected with the negative end of the operators। फर्स्ट टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ पेज नंबर 161 पर मौजूद है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट एंड सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। SI यूनिट ओम OHM और सिंबल इसका ये है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द थिकनेस ऑफ अ वायर एंड इट्स रेजिस्टेंस। द करंट हैज मोर डिफिकल्टी पासिंग थ्रू अ थिन कॉपर वायर देन अ थिक कॉपर वायर ऑफ द सेम लेंथ। द थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस देन द थिक कॉपर वायर। थर्ड क्वेश्चन है, a voltage of 12 volt is needed to make a current of 4 ampere flow through wire। Calculate the resistance of the wire। वोल्टेज क्या है? 12 वोल्ट है। करंट क्या है? 4 एम्पेयर और रेजिस्टेंस मालूम नहीं है। यहाँ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर करंट। वैल्यू पुट करें, कटिंग करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 3 ओमेग। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टेल्स अस हाउ मेनी जॉल्स ऑफ एनर्जी इट कन्वर्ट्स इन 1 सेकेंड। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज एसआई यूनिट एनी सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। एसआई यूनिट वाट, सिंबल है इसका W। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रेटेड एट 24 वाट एट 2 वोल्टेज। करंट मालूम नहीं है, ये फार्मूला लिखें और आगे इसमें पुटिंग करें। कटिंग करने के बाद डिवीजन करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 12। नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ पेज नंबर 164 पर मौजूद है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म किलोवाट आवर मीन। द टर्म किलोवाट आवर मीन दैट हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड इन 1 आवर। सजेस्ट व्हाई अ माइक्रोवेव ओवन। आगे क्वेश्चन आप बुक से मुकम्मल कर लें। आंसर में लिखें, ओवन रेटेड एट 800 वाट could cost less to run because it uses for less time than a table lamp। थर्ड क्वेश्चन है, if you can choose between a 3 ampere or a 13 ampere fuse, which type would you fit in a plug for the following appliance। State means voltage to be 230 watt। 460 watt electric drill। इसका आंसर देखिए। गिवन डेटा है इलेक्ट्रिकल पावर 460 वाट, करंट मालूम नहीं है। करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर और वोल्टेज। यहाँ पे जो गिवन डेटा है उसकी फिलिंग करें। कटिंग कर लेने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2 एम्पेयर। तो आंसर में आप लिखेंगे 3 एम्पेयर। और बी पार्ट है, डेटा गिवन है, इसके सोल्यूशन के बाद आपके पास आंसर आएगा 2300। ये इलेक्ट्रिक पावर आ गया हमारे पास। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर है 2300। इलेक्ट्रिक पावर की जगह लिखें 2300
और वोल्टेज में लिखें 213। इनकी कटिंग कर लेने के बाद आंसर आएगा 10 एम्पेयर, यानी कि 13 एम्पेयर फ्यूज इज अप्रोप्रिएट। सी पार्ट है इसका 920 वोल्ट आयरन, वोल्टेज है 230, करंट अननोन है, फॉर्मूला लिखें, इसमें जो गिवन वैल्यू है पुटिंग करें। कटिंग कर लेने के बाद आपके पास आंसर आएगा 4 और 3 एम्पेयर फ्यूज, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ फ्यूज। फ्यूज में लिखें अ फ्यूज इज अ थिन पीस ऑफ रेजिस्टेंस वायर विच हीट अप एंड मेल्ट इफ द करंट गेट सो हाई। सेकंड लिखें अ फ्यूज मस्ट ऑलवेज बी कनेक्टेड टू द लाइव वायर। थर्ड लिखें इफ इट is rated too high, it could allowed an overload to cause damage before melting the fuse wire। तो ब्रेकर में लिखें a residual circuit breaker, ब्रैकेट में लिखें RCB can be used to protect against this। सेकंड लिखें a residual circuit breaker contains an electromagnetic switch which quickly turn off the power if the current in the earth wire gets bigger than 0.03 ampere। Circuit breaker are recommended for use with lawn moving and portable tool like electric drill। Fifth question है what is an earth wire? Earth wire and its act as a safety wire if a fault occurs in an electrical appliance and the live wire connected to the earth wire, a short circuit is created। Explain how a double insulated appliance does not require on earth wire। आंसर में लिखें some electrical appliances are marked double insulated। These have no earth wire because their metal parts are covered in insulating plastic। The live wire can never touch the causing so cannot give the use a shocks। पेज नंबर 165 पर टेस्ट योरसेल्फ है एक्सप्लेन व्हाई इट इज इजी फॉर इलेक्ट्रिसिटी फॉलो थ्रू द ह्यूमन बॉडी। आंसर में लिखें द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ अराउंड 70% वाटर। वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड इजीएस्ट रूट टू अर्थ। Explain how an electrical shock can harm the human body। Electricity can cause severe burns, disrupted heartbeat, severe organ damage and even death। Next question है describe the safest way to disconnect an electrical appliance from a main socket। To switch off circuit breaker, suggest it would be very foolish to use a hair dryer while have the bath because wet human body is best conductor of electricity। Suggest it would be dangerous to use a fork to remove from and toaster because metal is best conductor of electricity। Next test yourself पेज नंबर 167 पर मौजूद है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है describe the shape of the magnetic field around a wire carrying an electric current। When an electric current flows through a wire it creates a magnetism field around। Give two ways in what the strength magnetic field around a wire। आगे क्वेश्चन बुक से मुकम्मल करें। Putting a rod of iron inside the solenoid। Next point लिखें increasing the number of coil the solenoid। What happened to the magnetic field? क्वेश्चन बुक से मुकम्मल करें। आंसर लिखें if the direction of the current is reversed, reverse की स्पेलिंग है REVERSAD, then the magnetic field is also reversed and as direction is anti-clockwise। What is solenoid? A long tightly wound coil is called solenoid। Explain the difference between a solenoid and an electromagnet। A long tightly wound coil is called solenoid while a solenoid with a iron core is called an electromagnet। Explain why a plotting compass is useful in determining magnetic field pattern because in this way we would be able to find out the magnetic field lines and poles of the magnetic field। लास्ट टेस्ट योरसेल्फ पेज नंबर 169 पर मौजूद है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोड्यूसेस द साउंड फ्रॉम अ स्पीकर। आंसर की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपकी सहूलत के लिए बनती है तो इसको लाइक भी कीजिएगा। आंसर की तरफ बढ़ते हैं।
The vibration causes pressure vibration in the air that provides sound from the speakers. Why is soft iron used in? इस क्वेश्चन के आंसर में लिखें contacts separate and cut off the soft iron so the spring is able to pull the hammer back to its starting position. Why does no current flow until? आंसर में लिखें the contact close a current flow in the magnet once more the hammer strikes the going and so on until the bell push in no longer pushed. Next question है why are circuit breaker used in home? A circuit breaker in same effect as a fuse but unlike a fuse it can be turned on again after it has tripped means turned off. Next question का A part है why are circuit breaker used in homes? आंसर में लिखें the circuit breaker a safely device that cut off the current if it get too high. इसका B part मैंने ऊपर लिखा हुआ है what is the advantage of using breakers? The circuit breaker the same effect as a fuse but unlike the fuse it can be turned on again after it has tripped. Fourth question है suggest what material the coil in electromagnetic devices might be made from. Give reasons why. आंसर लिखिए coils in electromagnetics devices are usually made of copper because it conducts electricity well and in cost effective. चैप्टर नंबर 10 के तमाम तर टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व हो गए हैं. अपना ख्याल रखिएगा. अगली वीडियो में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.